Hi Dinesh, hi Piyush, hi Bandit, hi everyone. So guys, today we'll be learning about video editing. Okay, it's going to be really interesting because that's what I have been doing for the past 2 years, I think. I have edited a ton of videos and I want to share with you everything about video editing. How do you start? What software should you take? And how can you start video editing? So we'll talk about the basic things that you should be knowing when you're editing your videos. And then we will be looking at how to get clients as a video editor. Okay, so it's going to be a really interesting class. Make sure that you stay till the end because I'll be looking at your questions, your doubts at the very end. Okay. Hi Manasvi, hi Kanika, hi Tanu, hi Naman, hi Vivek, hi Sachin, hi Gulam, hi Tushar, hi everyone. All right. So without wasting much time, we have a lot to cover today. So let's quickly get into this class. So first of all, the question that you might be thinking is, first of all, hi, I'm Ishan Sharma. The question you would be thinking is, why video editing, right? Like, why should you get into this field of video editing? Okay, for those of you who don't know me, I'm Ishan Sharma. I'm a third year student at BITS Pilani Goa campus. I am a YouTube creator. I have been editing all of my YouTube videos for the past 2 years. I am also I am also working with a lot of different freelance clients, and I run a business in which I help other businesses with video editing. Right. So over there as well, we have collectively edited over 1,000 separate videos. Okay. So yeah, Sushant, thank you. So I want to share everything that I've learned in this class itself. Okay. I hope that clears up who I am. Yeah, the question is why video editing, right? Why should you go in this space of video editing? The problem is there are a lot of different video editors available in the market, but most of them are not skilled enough, right? Just realize that for the first time. They lack a few things, and that is what if you can learn, you will become an exceptional video editor. I myself have screened over 1,000 different video editors, and from that I have chosen the 20 video editors that work with me right now in MarketUp. Okay, so that is what I have to say. I'll take all of your doubts at the end of this class. 15 minutes we will devote just to doubts. Okay, so just hold on for some time. I will get back to all of your doubts, don't worry. I am a new video editor. Okay, great. So why video editing? Because video content is booming right now. Okay, everyone that has a doubt, that has a question, वो simply जाते हैं YouTube पे सर्च करते हैं कि ये क्या होता है, how to tie a tie, how do you tie a knot. तो ऐसे करके जो भी questions होते हैं लोग just they just go on to YouTube and they learn from there, right? अगर आपको कोई चीज समझनी होती है, you would just search on YouTube and you will learn through that. That is why video content is exploding right now, and a lot of these YouTube creators cannot edit their own videos due to numerous reasons. Maybe they don't know the software, maybe they think it is too much time consuming, or maybe they just have other things to do with their life. Okay, so that's basically how that works. कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूं वीडियो एडिटिंग इन विंडोज 11 प्रो, हम सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, अभी रुक जाओ. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. हिंदी में बताइए, हिंदी में बता देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है. हाउ डू यू नो थरुण स्पीक्स एंड आकाश मजुमदार great editors? They are friends, bro. They are friends. Video editor just came here to gain some extra knowledge. That is great. Welcome. All right, so I'll quickly get started. That is the brief intro. Video editing is in demand. It's a highly paid skill. You will go to Upwork or Fiverr. You will find video editors charging a lot for their video editing services, and that is because not everyone knows how to edit engaging videos, right? YouTube पे क्या होता है, लोग कोई वीडियो देखते हैं, थोड़ी देर वीडियो को देखते हैं और फिर वीडियो को छोड़ देते हैं. बट अगर आपकी वीडियो एंगेजिंग रहेगी देन लोग ज्यादा देर तक देखेंगे, एंड यूट्यूब यही चाहता है. यूट्यूब चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह की वीडियो रिकमेंड हो जो कि एंगेजिंग हो, ताकि लोग उस वीडियो को ज्यादा टाइम तक देखें, एंड योर चैनल गेट्स recommended and more people spend more time on YouTube. That's basically what they want, and if you can give that to them, then it would be great. So that's basically the idea. What tools do you need? First of all, it is a must have to, it's really important to have a laptop, first of all, if you want to do this professionally to a point at which you can get clients. Okay, so you must have a laptop. That is the most important thing. Have a laptop. Okay, कौन सा laptop होना चाहिए? So first of all, you can choose between Windows or Mac. I currently have a Mac, so I have edited a lot of videos on my Windows laptop as well. So I will talk about that too.
but it doesn't matter much what OS you use. Yes, if you can get yourself the M1 series of MacBooks and Mac Minis, then that is going to be the best thing that you can do. अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपके पास वीडियो आती है, आप वीडियो को एडिट करते हो और फिर आप उसको एक्सपोर्ट करते हो. जब एक्सपोर्ट करते हो तो सॉफ्टवेयर को वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए सारे जो आपने एडिटिंग करी है उसको इफेक्ट में लाने के लिए टाइम लगता है, right? So if you can have a really fast processor, a really fast if you have a lot of RAM, then ये जो editing होती है, ये जो exporting होती है, बहुत जल्दी जल्दी होती है, ठीक है? So you have to make sure that you have the best laptop that you can get. ये कौन सा सब्जेक्ट की क्लास है ब्रो? ये एडिटिंग की क्लास है, वीडियो एडिटिंग की क्लास है, ये तुमको स्कूल में नहीं मिलेगी. Best laptop apart from MacBook, you can try to get gaming laptops. I think they will work really well as well. क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, they have really good GPU, they have really good processor, so that can work really well. और उनकी screen भी बड़ी होती है, so you can view everything properly. ठीक है? So this is an important thing. Yes, it is a barrier that you might have, but things which have barrier are actually good for you if you think about it. क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता, because everyone doesn't have a nice laptop, then it will be harder for you. It will be easier for you to compete with people क्योंकि सब लोगों के पास अच्छा लैपटॉप नहीं होता. Okay, so just make sure that you understand this one point. Ryzen 3 प्रोसेसर यूज कर सकते हो यार, but it's like हो जाएगा, काम चल जाएगा, but it will just take a lot longer to load and to export videos. ठीक है, my laptop is M1 is amazing. That's what I am using right now as well. हाँ यार, मैं यूट्यूबर हूँ ईशा. 16 GB RAM is enough. Definitely it is enough. RAM के लिए at least you should have 8 फॉर एडिटिंग वीडियोस प्रोफेशनली, है ना? मतलब प्रोफेशनली का मतलब होता है एक प्रॉपर क्लाइंट्स हैं, यू आर एडिटिंग वीडियोस फॉर देम, एटलीस्ट दिस मच. recommended is 16. Okay, I personally also have the 16 GB MacBook Air, that's what I'm using right now. उसके बाद आता है यार, नेक्स्ट चीज होती है योर प्रोसेसर. इट इज बेटर इफ यू कैन गेट AMD Ryzen 5 5500 3500 या फिर उससे ऊपर वाले जो होते हैं 4500 सीरीज जो होती है, सो यू कैन ट्राई टू गेट दैट, और M1 इज द बेस्ट, राइट? M1 इज बेस्ट. देन आफ्टर दैट आई वुड से AMD Ryzen के जो आते हैं प्रोसेसर, यू कैन ट्राई टू गेट दैट. ठीक है, और इफ यू वांट यू कैन जस्ट बिल्ड योर ओन पीसी फ्रॉम स्क्रैच, यू कैन बिल्ड कस्टम पीसीज एज वेल. हाँ, 4600H is going to be best. And then you have Intel भी चलता है, but Intel is just like, it is slow and it is not the best thing that you can do. Wanna be a video editor, skills भी हैं बहुत, Fiverr पे काम करना आ रहा है, like बहुत वीडियोस देखे YouTube पे, but नहीं हो पा रहा. क्यों नहीं हो पा रहा ब्रो? ठीक है, देखो लैपटॉप आ गया, देन वी कैन थिंक अबाउट द सॉफ्टवेयर. तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं एक्चुअली टू एडिट योर ओन वीडियोस. द मोस्ट पॉपुलर वंस आई विल लिस्ट ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव फाइनल कट प्रो. ओके, सेकेंडली यू हैव DaVinci Resolve, and then you have Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro, and you also have effects, After Effects करके. So यहाँ पे क्या होता है, whatever motion graphics or things like that you need to do, motion graphics होते हैं After Effects में, फिर उसको export करके use करते हैं in Premiere Pro, right? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा फाइनल कट प्रो के साथ है, बिकॉज आई यूज अ मैकबुक, एंड देन आई हैव आल्सो यूज्ड DaVinci Resolve. अब देखो ये पेड है, फाइनल कट प्रो इज पेड, Adobe Premiere Pro is paid, but this is free. Okay, so DaVinci Resolve is free and you can use this for free without paying something. फाइनल कट प्रो का भी एक 90 days का ट्रायल आता है स्टार्टिंग में, विदाउट द नीड टू एंटर अ क्रेडिट कार्ड, सो यू कैन यूज दैट इफ यू वांट टू. ओके, Adobe Premiere Pro को भी तुम क्रैक यूज करके कर सकते हो, बट आई वुड recommend you to get a proper version, proper license if you want to use Premiere Pro. ठीक है, the most widely used is going to be Premiere Pro and उसके बाद Final Cut Pro, just because Adobe Suite is like omnipresent. सबके पास Adobe का सॉफ्टवेयर होता है, and it is used in both Mac OS as well as Windows, so it is the most popular one. Camtasia बाकी सारे पता नहीं मेरे को, these are not as good as these, right? So best free software is going to be DaVinci Resolve. उसके बाद बहुत सारे आते हैं, right? You have Filmora, watermark नहीं होता bro इसमें कहीं पे भी. DaVinci Resolve में कोई watermark नहीं होता, for free you can use it, and Final Cut Pro में भी you have a 90-day trial, after which you can extend it by buying it.
लाइट वर्क्स, दीज आर फाइन, बट अच्छे जो होते हैं ना, जो ढंग के होते हैं, विद विच यू कैन एक्चुअली प्रोफेशनली एडिट वीडियोस, आर दीज थ्री ओनली, फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. फिल्मोरा भी होता है, बट दिस इज द बेस्ट वन. Which is the best? I personally use FCP, and that's what you will find the top YouTubers also use. Right? MKBHD also uses FCP. So, anyways, once you decide which one do you want to pick, then you can go ahead with it, download it from their website, right? FCP के लिए you would just be having your MacBook and you can download it like that. Bro, फोटोपी जो चीज है वो फोटो एडिटिंग के लिए होती है. हम लोग यहाँ पर वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हैं. आईपैड भी यूज कर सकते हो यार, बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनली एडिटिंग अ वीडियो. उसके लिए इट्स बेस्ट टू हैव अ लैपटॉप. आईपैड में कर सकते हो, बट यू ट्राई टू हैव अ लैपटॉप, दैट इज बेटर. ठीक है, चलो. सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ फाइनल कट प्रो. विल क्विकली गेट टू अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्क्स, एंड देन वी कैन वेट फॉर अ मिनट. ठीक है, आई विल शेयर माई स्क्रीन नाउ. इज माई स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन दिख रही है या क्रैक कर सकते हो, बट देन मतलब मैं क्या बताऊं यहाँ पर. आई कैन नॉट टेल यू ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म टू डू थिंग्स लाइक दैट ना. दैट इज टोटली अप टू यू. This is Final Cut Pro. You can use Telegram if you want to. You can do whatever you want with that. That is very simple. You know how that works. But this is what Final Cut Pro looks like. यहाँ पे ये project खुला हुआ है मेरा. So I will take you through step by step and I will show you how everything works. First of all, can you see the screen properly? Screen ठीक से दिख रही है ना? चलो ठीक है, बढ़िया. So ये मैंने एक project खोला हुआ है. I will show you from scratch how to build something over here. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यू गो इनटू द फाइल सेक्शन, क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन अ लाइब्रेरी. ठीक है. सो द वे दिस वर्क्स इज दैट यू फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी के अंदर यू ओपन एन इवेंट, एंड इवेंट के अंदर यू ओपन अ प्रोजेक्ट, एंड देन यू स्टार्ट एडिटिंग इन दैट प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे क्या होता है, एक इवेंट के अंदर यू विल एंटर ऑल ऑफ द फुटेज दैट यू हैव. अगर आपको कोई भी वीडियो एडिट करनी है तो उसका फुटेज होता है स्टार्टिंग में, जो आपको मिलता है रॉ फुटेज, जिसको बोलते हैं. रॉ फुटेज को आप इस इवेंट के अंदर डालोगे, एंड देन इस इवेंट के अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स खोल सकते हो, एंड ईच प्रोजेक्ट will have access to all of the assets, raw footages that you have added in that event. ठीक है. So just to make it clear, थोड़ा सा confusing होता है ये. First of all you have the library. Then in that you have an event, and event के अंदर you have a project. Okay, so make sure that you अंडरस्टैंड दिस वन थिंग. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये चीज होती है ना, ये सिर्फ FCP में होती है. बाकी जगहों में दिस कॉम्प्लिकेशन इज नॉट देयर, सो डोंट वरी अबाउट दिस इफ यू डोंट यूज FCP. इज इट फॉर एवरी सॉफ्टवेयर? नहीं, सबके लिए नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर FCP. बट जो बाकी चीजें होती है ना, मतलब बेसिक कट करना, बेसिक टाइमलाइन में चीजें डालना, टेक्स्ट डालना, तो वो सब सेम रहता है हर जगह. राइट, वहां पे बहुत डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज बेसिक थिंग्स आर द सेम. I have currently learned all the basics of Premiere Pro, so how can I continue? थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, right? So once we complete the basics of video editing, then I will go to talk about how can you get clients as a video editor, okay? But first we need to talk about this. So let me share my screen first of all. Recording हो गया, recording will be available, don't worry about that. So this is what FCP looks like. I will go and I will click on library, and I will make a new library, and I will put it in the movies folder, and I will just call it untitled 1. ठीक है. So I'm just keeping it as default. तो अब मेरे को ये पहली लाइब्रेरी मिल गई. यहाँ पे मेरा पहला एक इवेंट भी बन गया, और इस इवेंट के अंदर आई कैन पुट इन माई ओन फुटेज. ठीक है. अब मैं फुटेज कहाँ से डालूंगा? आई कैन रिकॉर्ड अ फुटेज फ्रॉम अ कैमरा, एंड फिर उसकी जो SD कार्ड होता है, फ्रॉम दैट आई कैन गेट द फुटेज. So I will give you a live example of editing my own video that is coming out in January. तो उस देखेंगे कैसे उसको edit करते हैं from scratch. So anyways, ये था मेरा proper एक event. अब इस event के अंदर I will make a project. ठीक है. So I'll make a project and I'll just call this main. ठीक है. I'll call it as main, and अब I can now start entering all the footages over here. और फिर this is my timeline. ये जो नीचे दिख रहा है ना, this dark line over here, this is called as a timeline.
ओके और ये जो बीच वाली है, दिस इज द मेन टाइमलाइन दैट यू हैव. क्या होता है कि यू माइट हैव सीन मेनी टाइम्स दैट व्हेनेवर वी हैव अ वीडियो के सामने एक वो लिखा आता है सब्सक्राइब का बटन आता है ना. तो ये जो सब्सक्राइब का बटन था, दिस वाज एन एसेट दैट वाज एडेड ऑन टॉप ऑफ द प्रॉपर वीडियो. जो मेन वीडियो है उसके ऊपर सब्सक्राइब का एक एसेट डाला हुआ होता है, तो उसको डालते हैं ऑन टॉप ऑफ दिस टाइमलाइन. ठीक है, तो जस्ट टू गो बैक एंड शो यू एन एग्जांपल, ये एक प्रोजेक्ट है, दिस इज अ शॉर्ट दैट आई वाज रिकॉर्डिंग. यहां पर मैंने क्या किया, ये जो पार्ट है, दिस इज द मेन फुटेज, राइट. ये जो पूरा कंटेंट है, दिस इज द मेन कंटेंट दैट आई हैव. और इसके ऊपर जो सारी चीजें हैं ना, ये वाली जो मैंने लिखी हुई है, ये जो ये है एक, दिस इज अ टेक्स्ट दैट आई हैव एडेड ऑन टॉप ऑफ दिस. तो ये मेन टाइमलाइन है, उसके ऊपर ये उसकी ऊपर वाली लेयर है, और इस लेयर के ऊपर आई हैव वन मोर लेयर दैट इज दिस वन. सो दिस इज माई प्ले हेड बेसिकली. ये प्ले हेड को मैं घुमा कहीं भी ले जा सकता हूँ. दैट इज हाउ आई कैन go through the whole project. ठीक है, you will have the same thing in all the other softwares as well. So that is basically how that works. यहाँ पर तुमको ये wave forms दिख रही होंगी. This shows the level of the volume and जो मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, so that is basically how that works. This is a video which also has audio. अब मैं यहाँ पर right click करके I can click on detach audio as well. तो इससे क्या होगा, मेरा जो audio है that will come out as a separate file and then I will only be left with my video. तो अभी तो ये synced है, but that's basically how that works. I will undo it. So again for undo we will just click on Control Z. ठीक है, तो that's how this works. अभी first of all I will what I will do right now is I'll just go on to a project that I have been using and then we will start looking at that. चैनल का नाम क्या है, ईशान शर्मा है यार. ईशान शर्मा सर्च करो वहां पर on YouTube. Okay, I am going to add my SSD. तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मेरे सारे जो फाइल्स होती हैं, सारे फुटेज जो होती है, दैट इज ऑन अ सेपरेट SSD दैट आई यूज. तो उसको मैं लैपटॉप के अंदर नहीं रखता हूँ, राइट, बिकॉज बहुत बड़ा फाइल होता है वो, बहुत सारा स्टोरेज हो जाता है उसका. तो जस्ट टू शो यू दिस इज व्हाट माय एक्सटर्नल SSD लुक्स लाइक. यहाँ पर 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं और ऑलरेडी 200 GB का स्पेस भरा हुआ है. सो इट इज अ मस्ट दैट it is really important if you have a lot of storage on your laptop. You play button. Bro, my channel name is Ishan Sharma. You can search it on the YouTube platform. ठीक है, so this is the use space. I'll just open up a project and we can then properly see how it works. So I'm again going to open up Final Cut Pro and I will also open up my एक्सटर्नल SSD. अब देखो यहाँ पे मैं कैसे वीडियो को सेटअप करता हूँ. आई विल गो इनटू दिस वीडियोस, आई विल गो इनटू लेट्स जस्ट से रिकॉर्डेड एंड आई विल गो इनटू प्रोग्रामिंग लैपटॉप्स 2022. ठीक है, तो दिस इज द मेन फोल्डर ऑफ दिस वीडियो. इसके अंदर आई हैव अ लाइब्रेरी फाइल. इट्स कॉल्ड एज अ FCP फाइल. इफ यू गो इनटू द इन्फो, इट सेज इट इज अ फाइनल कट प्रो लाइब्रेरी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट दिस इज. उसके बाद आई हैव दिस रॉ फोल्डर जहां पर रॉ फाइल्स होती हैं, राइट. सो ऑल ऑफ माय ऑडियो, ऑल ऑफ माय वीडियो दैट आई हैव फ्रॉम माय कैमरा is stored in this raw file right here. And then I have this main cut. This is the first iteration. जब भी आप वीडियो को एडिट कर रहे होगे तो आप मल्टीपल आइटरेशंस में वीडियो को एडिट करते हो. पहला आइटरेशन होता है आपका मेन कट्स. तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं कभी भी एक फ्लो में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता. मैं कई बार रुक जाता हूँ या कई बार मैं चेक करता हूँ कि मैं सही से बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ. तो मैंने बोला कि 3 टिप्स टू बिकम अ बेटर वीडियो एडिटर, राइट. तो मैंने पहली टिप बोली, देन आई कैन स्टॉप एंड आई कैन लुक एट द सेकंड टिप फ्रॉम माय लैपटॉप. तो उसके बीच में जो टाइम आया ना, आई कैन कट दैट एंड दैट इज व्हाट आई हैव टू डू इन द फर्स्ट आइटरेशन. तो मैं पूरे वीडियो के थ्रू जाता हूँ, जो भी कुछ अनवांटेड पार्ट्स हैं उनको मैं कट कर देता हूँ. And that is what my first iteration is going to be about, right? So that at the end of this iteration, आपके पास जो वीडियो बचेगी, जो टाइमलाइन बचेगी, that is the exact content that you want in your video. Okay, so that is what I have done right there. This is the first iteration, as you can see right here. I'm Ishan Sharma. I'm not sure if you can view, if you can get the I want to be your keyboard audio as well. Audio आया था क्या इसका? Are you able to listen to the audio? ऑडियो आ रहा था? सही है, ठीक है, तो दैट इज गुड.
सो कहाँ गया, हाँ, so this is basically what you have. अब मैं I'll just click on this library and now I can start using this library right here. So I will go here, I will click on this main. So this is the main file that I have. This is the whole timeline. मैंने बेसिक कट्स कर दिए हैं, जहां पर भी आई एम फंबलिंग, जहां पर मैं ठीक से नहीं बोल रहा हूँ या जहां पर मैंने वापस से बोली है सेम चीज, वो मैंने यहाँ पर एक बार कर दिया. सो एज यू कैन सी यहाँ पर 4-5 कट्स हैं, एंड दिस इज लाइक अ प्रॉपर 9 minute long YouTube video. So this is what we have. अब वो कट्स करने में टाइम लगता है, so I'm not going to show you पूरा करके नहीं दिखाने वाला because it will take a lot of time, but I will show you a few things. First of all, अगर आपको zoom in करना है in your timeline, अभी क्या हो रहा है, अभी पूरी 9 मिनट की दिख रही है, right? In this small space. If you want to view this properly, if you want to zoom in, then you can just say command plus, okay? या फिर कंट्रोल प्लस, कमांड प्लस इज व्हाट वी यूज. सो ये शॉर्टकट हर जगह चलेगा. सो दिस इज वेरी स्टैंडर्ड. सो व्हेन आई जूम इन, दिस इज व्हाट आई कैन सी. सो नाउ अब जो मुझे दिख रहा है दैट इज जस्ट द फर्स्ट 15 seconds, विच इज मच बेटर, राइट? नाउ आई कैन प्रॉपरली सी कौन सा कंटेंट मुझको चाहिए, कौन सा कंटेंट मुझको नहीं चाहिए. नाउ लेट्स से मुझे कुछ कट्स करने हैं, आई वांट टू कट सम कंटेंट जो मुझे नहीं चाहिए अपने वीडियो के अंदर, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज, आई हैव दिस प्ले हेड गोइंग अराउंड विद मी. तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा एंड देन आई विल चूज दिस फाइल. इस मतलब इस वीडियो क्लिप को मैं चूज करूंगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन, आई विल बेसिकली से कमांड बी. ओके, कमांड बी इज व्हाट आई विल डू, एंड ये करके मैंने एक कट लगा दिया यहां पर. ओके, इन माई होल वीडियो क्लिप आई नाउ हैव अ कट ओवर हियर. उसके बाद आई विल से, लेट्स जस्ट से कि मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं एंड आई वांट टू इरेज दिस मच कंटेंट. मुझे यहां से लेकर के यहां तक वाला जो क्लिप है मुझे वो काटना है बिकॉज आई डोंट वांट इट, फॉर एन एग्जांपल. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट keep my playhead on top of that position. I will again click on Control B. I will click on this clip and I will click on backspace, and that will get rid of that file. अब देखो, द गुड पार्ट अबाउट यूजिंग फाइनल कट प्रो इज दैट हाँ वो हमेशा रिपल डिलीट करता है. रिपल डिलीट का क्या मतलब हुआ, एज यू जस्ट सॉ देयर, ये जो फाइल थी जो मैंने अभी डिलीट करी, जैसे ही मैंने डिलीट करी तो यहाँ पर होल नहीं हुआ, यहाँ पर इट्स नॉट लाइक इट इज एम्प्टी. जैसे ही मैंने उसको डिलीट किया वैसे ही ये वाली जो क्लिप है ये आगे आ गई एंड इट टुक द प्लेस ऑफ दिस क्लिप राइट हियर, है ना? सो दिस इज कॉल्ड एज रिपल डिलीट. आप डिलीट भी कर रहे हो एंड you are sending a ripple across the whole timeline, ताकि जो आगे वाला फुटेज है वो आगे आ जाए, राइट? मतलब जो बाद वाला फुटेज है वो आगे आ जाए, राइट? सो वंस यू डिलीट दिस, दिस इज व्हाट यू विल गेट ओवर हियर. ठीक है, सो दैट्स बेसिकली हाउ दैट वर्क्स. अब इसको एडिट कट करने के और भी तरीके होते हैं विच वी कैन डिस्कस राइट नाउ. तो एक और तरीका होता है, दिस इज मच बेटर इफ यू आर ट्राइंग टू एडिट फास्टली. अगर जल्दी जल्दी एडिट करना है, दिस इज व्हाट यू कैन यूज. सो व्हाट वी नॉर्मली डू हियर इज दैट, जैसे यहाँ पे ये कट लगा रखा है मैंने, है ना? सो आई विल गो टू लेट्स जस्ट से दिस पॉइंट, एंड मुझे अगर यहाँ से लेकर के ये कट वाले पॉइंट तक मेरे को इसको हटाना है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट क्लिक ऑन ऑप्शन एंड देन ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, सो आई जस्ट शो दैट टू यू. जो ये वाला ब्रैकेट होता है ना, ये ब्रैकेट मैं यूज करूंगा. सो इट्स लाइक ऑप्शन प्लस दिस. I'll just show you how this works. So we'll go here and we will just click on option and that. ठीक है, so उससे क्या हुआ, it just looks at your playhead and playhead के इस तरफ में जो भी कंटेंट था उसको उसने कट कर दिया इन जस्ट वन सेटिंग. पहले हम लोग दो एक्शन कर रहे थे, पहले हम लोग यहाँ पे कट लगाया, यहाँ कट लगाया, फिर डिलीट किया. सो दैट इज हाउ वी गेट रिड ऑफ दैट क्लिप. यहाँ पर विद जस्ट द हेल्प ऑफ दिस वन शॉर्टकट वी कैन गेट रिड ऑफ दैट थिंग. अब ये दिस माइट लुक स्मॉल टू यू, बट जब आप बहुत सारे कट्स कर रहे होगे देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ शॉर्टकट लाइक दिस. सो दैट्स व्हाई दिस इज important. So this is basically how you will implement cuts in your timeline. ठीक है, this is the main timeline. It's also called as the A roll, right? तो A roll होता है, फिर B roll होता है. B roll is something that you put on top of the A roll just to make it more interesting. So we will look at the A roll in B roll in some time. ठीक है, but that's basically how this works.
So you've learned about the first iteration that you do. Navigation, I've told you how to basically understand about this thing. जो चीज़ होती है ना, library, event, project, ठीक है? So this is what we have learned. उसके बाद क्यों तुमसे very late joined, you can look at the recording. किस टाइप का वीडियो था? So you need to edit out that specific part. Repeat the shortcut, please. यार it's like option plus ये वाला जो होता है, oh wait 1 minute, option plus ये वाला होता है, right? And you can use option plus this one. तो इसमें क्या होगा, अगर इस तरफ कट लगा हुआ है and here you have your playhead, तो ये वाला पूरा पार्ट कट हो जाएगा, ठीक है? ये बेसिक कट है, मतलब इसका कोई अलग से नाम हम थोड़ी कुछ होता है ऐसा, ठीक है? DaVinci रूल यूज कर सकते हो यार, नॉट एन इशू, इट इज द सेम थिंग, मतलब आई कैन ओपन दैट अप एज वेल. DaVinci Resolve is also there, so I have that with me, but I just don't use it these days because I have Final Cut Pro to use, right? So I'll just show you that as well right here. So this is DaVinci Resolve 17. This is the latest version. We'll just click on a new project and I'll just open this up. ठीक है, यहाँ पे सिंपल होता है, बस एक प्रोजेक्ट होता है and you put content into it and then you can start using it, okay, without any problem. ठीक है, so ठीक है, so यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे you have various panes, right? तो पहला पेन होता है, this is called as, इसका नाम तो I don't really remember, but the basic idea is that यहाँ पे कट होता है, right? Then you have, this is the pane in which you have various different timelines, and यहाँ पर you can create various different effects. It's called as the fusion one, ठीक है? So then you have the color, and then you have the music वाला part, and then you have the export वाला part. So we can look at this afterwards. It's not too difficult to understand. Basic idea समझो, then you can easily use other softwares as well very easily. Okay, so that is visual, that is DaVinci Resolve. Filter मतलब क्या? देखो, this is FCP. Let's get back to it. So the first iteration is done. Second iteration is to put text on your screen, on whatever it is that you are using, or it would also be to put some stock footage या फिर some other form of asset, some photo, some images, whatever it is that you want to do. So you can find it online. You can just go to like laptop, you can search for that. You can search for laptop. You can get some laptop images from wherever you want and you can start using it, right? Let's just say we have this. I can save this image with me over here. I want to put this in the Extreme SSD, or I want to put it in the same folder in which I have other things as well. So I will go into programming laptops and I will put it in right here. तो अब ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया. ओके, सो आई हैव दिस फोटो विद मी दैट आई कैन नाउ यूज इन माय वीडियो. तो इसको डाउनलोड करके नाउ आई नीड टू इंपोर्ट इट एज वेल. सो इंपोर्ट करने के लिए आई विल जस्ट ओपन अप माय फोल्डर राइट हियर. एंड आई जस्ट नीड टू गो and I have this video with me. ठीक है, मैं इसको ड्रैग करके I can just put it over here. And now I have this video with me. I have this photo with me. इसको यहाँ पे ड्रैग करके I can just put up over here. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अपनी टाइमलाइन के ऊपर डाल दिया. ये पहली लेयर थी that you saw. This is the first layer that I have right here. And इसके ऊपर I can have separate layers. ठीक है, so for example I have this layer of a photo, right? तो यहाँ पर कोई फोटो है and I can just keep it. I can move it wherever I want to, and then I can just use it with me. I can also change the duration for which this image will be available on the screen. So I can increase it, I can decrease it, and इस तरह से मैं इसको use कर सकता हूँ. ठीक है, now we can do a lot more with the help of this. I can put my playhead on top of this image
and I can select this image. अब देखो, this is the basic area in which you will be doing all of your editing, right? This is the area in which you will be putting all of your projects and you will be putting all of your assets. And this is the section wherein you would be editing all of these things. It's called as the pane in which you edit and make some changes. So asset मैंने जो select करा हुआ, that is this image, and now I can start changing some things. First of all, I have this opacity, ठीक है? So I can reduce the opacity, तो ऐसा लगेगा कि it will be opaque, right? So it will be partially visible and partially I will be visible, right? So that's basically what I can do. It's not of much use right now, but we can use it in some instances. उसके बाद I have transform, तो यहाँ पे I can change the visual aspects of it. So just to give you some examples, I have the scale. Scale से क्या होता है, कोई भी चीज बड़ी और छोटी हो सकती है. And I can just click on this and I can reduce the size of this image, and I can also increase the size of this image if I want to. ठीक है? So that is basically how this works. After this, we also have scale x and scale y. अगर आपको individually x and y coordinates में scale करना है, बड़ा करना है या छोटा करना है, so you can do that over here. So it is possible that you can increase it like this, you can reduce it like this, but this doesn't really look good. So try to not do it individually, only use scale all feature. So that's how that works. Then you also have this thing called as anchor. Anchor में क्या होता है? You can present a point on which it should be situated. It should be located on, right? So you can use this anchor. Then you have positioning. Positioning में क्या होता है? You can tell where do you want it to be present. जैसे ये फोटो है जो मुझे इसको वैसे थोड़ा नीचे करना है, राइट? यहाँ पे मेरा मुंह दिख रहा है, मुंह के ऊपर ये आ गया, so I don't want that to happen. So what I can do here is I can use this position feature and I can pull it down with the help of this y coordinate. तो y को मैं नीचे करूंगा तो फिर ये जो फोटो है ये नीचे जाएगी, ठीक है? That's basically how that works. उसको बढ़ाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा, and ये x की पोजीशन को करूंगा तो ये राइट और लेफ्ट में जाएगा, right? So that's basically how this works. It's very simple, nothing too complicated. I hope I'm able to make it clear for all of you. Then we have this rotation. Rotation में if I increase it तो वो clockwise घूमेगा, if I reduce it तो वो anti clockwise घूमेगा, right? So और actually उल्टा होता है यहाँ पे right? So if I increase it, it goes anti clockwise, and if I reduce it, it goes clockwise, ठीक है? So you can do all sorts of things with it if you want to. So this is definitely available to you. उसके बाद आता है crop. Crop में क्या होता है? Basically, I can crop certain parts of this image, right? So let me first of all increase the size of this image. This is good. अब let's say I only want to look at this photo of this laptop. मुझे बाकी का जो part है मुझे को नहीं चाहिए, so I can remove that with the help of this crop thing. So crop में what I will do here is I will look at the left part, ठीक है? तो मुझे let's say left part से trim करना है अगर, so I will start increasing this. तो इससे क्या होगा? Left side से वो आगे बढ़ेगा, right? It will move according to what I am doing right here. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, राइट? इफ यू गो इनटू स्केल एक्स, यहाँ पे मैं ऐसे करूंगा तो ये तो वीडियो को जो ये फोटो को ऐसे पिचका देगा, बट देन लेट मी चेंज दिस बैक टू 78. बट देन इफ यू गो ऑन फॉर लेफ्ट में क्या होता है? इट विल कट आउट सर्टन पार्ट्स ऑफ दिस फोटो, ठीक है? सो दैट्स हाउ दैट वर्क्स. राइट से करना है तो राइट से ऐसे हो जाएगा, टॉप से करना है तो दैट विल लुक लाइक दिस, एंड देन बॉटम से करना है दैट विल लुक लाइक दिस, ठीक है? सो दिस अगेन इज वेरी मच यूजफुल व्हेनेवर यू आर हैविंग फुटेजेस दैट यू वांट टू क्रॉप. फिर आता है डिस्टॉर्ट. तो यू कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट थिंग्स इफ यू वांट टू. सो अगर आपको किसी भी वीडियो को कोई सर्टेन एंगल में दिखाना है, सो यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस टूल राइट हियर, ठीक है? So अगर आपको उसको टिल्ट करना है थोड़ा सा तो you can do that as well. So that is what you do with the help of distort, and this is the main features that you have with any asset. So ये हो गया basic editing that you can do with the help of it. The same applies to videos as well. तो ये वीडियो जो है मेरी, इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ
I have my playhead on top of it, and then मैं यहाँ पे जाकर के वो सारे ही एडिटिंग फीचर्स यहाँ पर भी ला सकता हूँ. तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, इसको छोटा भी कर सकता हूँ. I can bring it back to normal. तो यहाँ पे एक रीसेट वाला बटन है यहाँ पे. If you can see this, I will click on this and I can get back to my normal stage, the default stage. I can also rotate if I want to do that. Same चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है. I can position it. तो इस तरह से मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ, like this, and I can always reset if I want to. So that's how that works. Then you have this crop feature. It is the very same thing. Distort आता है. Then I have stabilization. Stabilization क्या होता है? बेसिकली आप देखोगे whenever you use a phone, आप फोन से कोई चीज रिकॉर्ड करते हो तो वो कई बार अच्छे से स्मूथली रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, राइट? यू माइट आप ठीक से पकड़ नहीं पाते हो, दोस्तों हिल रहा है वीडियो, ऐसा कुछ हो रहा है. सो स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, वो वीडियो की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जो हिकअप्स होते हैं, उसको फिक्स कर देगा सो दैट वीडियो लुक स्मूथ. ठीक है, तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस तो वो वीडियो को अच्छे से मॉनिटर कर देगा. यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो इज प्रीटी स्टेबल, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. बट अगर आप लेट्स से कहीं दौड़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, सो दिस माइट बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव. फिर यहाँ पर आता है एक कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट, जिसको हम बाद में देखेंगे. कलर ग्रेडिंग इज बेसिकली अ वे फॉर यू टू change the color science of the asset that you are having, be it a video or a photo. उसके बाद आता है volume, right? So you can alter the volume over here. आप इसे कम कर सकते हो, इसको बढ़ा भी सकते हो if you want to, but this is what you have right here. ठीक है, so उसके बाद equalization piece होती है एक, फिर you have other things as well with you, but we will not focus on that right now. We will look at that afterwards. फिर एक I करके एक चीज आती है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन रहती है अबाउट दिस वन क्लिप दैट वी हैव. तो इस क्लिप को स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पर हो रही है, इस क्लिप का नाम क्या है, एंड थिंग्स ऑफ दैट नेचर, राइट? ऑडियो किस तरह की है, स्टीरियो है या फिर बेसिकली ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इज स्टोर्ड ओवर हियर इन द आई टैब, इन द इन्फो टैब. उसके बाद let's just look at what else do we have. You can adjust the view or the size of this view that you are having, this video that you are having. तो आप इसको कम कर सकते हो like this, तो वीडियो छोटी हो गई अभी यहाँ पे. And you can also change it like this according to your own liking. ठीक है, then you can always click on fit, जिससे वो automatically size के हिसाब से उसको fit कर देगा. Then you have some more options over here that we will discuss after some time. ठीक है. Okay, so this is what we have. This is the main timeline that you have. Let me try to play this and see what are we talking about. Hi everyone, I am Ishan Sharma. अगर आप एक college student, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि I am Ishan Sharma, right? So if I go in here, I can actually add text right next to it saying Ishan Sharma. तो वो करने के लिए क्या करूंगा मैं? I'll first of all locate कि मुझे कहाँ पर वो text डालना है. अगर आप एक college student हो तो I am Ishan Sharma. So I have to put it over here. यहाँ से वो स्टार्ट होगा वो टेक्स्ट. अब मुझे टेक्स्ट डालने के दो तीन तरीके होते हैं. नंबर वन, अगर मैं अपना प्ले हेड यहाँ पर रखूंगा, आई कैन क्लिक ऑन Ctrl+T. ठीक है, Ctrl+T से आई कैन पुट माई टेक्स्ट ऑन टॉप ऑफ दैट लोकेशन. तो यहाँ पर एक बेसिक टेक्स्ट का एक एसेट आ चुका है. अब मैं इससे क्या करूंगा, इसमें जाकर के आई विल गो इनटू द टी टैब. टी में क्या होता है, टी डजंट हैव एनीथिंग, बट आई विल गो इनटू दिस इंफॉर्मेशन वाला पार्ट. यहाँ पे आई कैन पुट इन द टेक्स्ट, I can put in the text format, the text style I want to go ahead with, and then I can choose the font, I can choose the size, alignment, spacing, tracking, whatever it is. So I'll take you through all of these things. So abhi you might see this title written over here. So I can click here and I can change this to, let's say, Ishan Sharma, right? So I'll just make it Ishan Sharma. अब देखो यहाँ पे we will change the font of this thing. So I'll go in here and I can choose whatever font I want to. ये सारे fonts from default are available to you. Let's just say I want to choose a font like this. Every font has a different use case, so make sure that you understand कि किस font को कहाँ पे use करना चाहिए. Right? There are certain situations in which एक बहुत ही like अच्छा वाला font use करना चाहिए. Then let's say you're going on a trip, तो उसका कोई vlog हुआ तो उसके लिए you can use some other font style. So that's what you need to understand. So this is what you have. This is called as Comica Alexis. थोड़ा सा ये अच्छा दिखने वाला font होता है, and you can always
bring it down like here. अभी भी ये ठीक से visible नहीं है, right? Because it is white and the background is also yellow. This is called as contrasting. You have to make sure that the background is contrasting with the color of the text. तो वो कैसे कर सकते हैं, हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं if that is what we want, or we can do some other things as well that I will be talking about right now. फिर आता है हमारा साइज. टेक्स्ट का साइज आई कैन इंक्रीज एंड दैट वे ये टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा, एज यू कैन सी राइट हियर, है ना. एंड आई कैन ऑल्सो इंक्रीज द साइज बाय गोइंग ऑन टू द स्केल टैब. तो वो सेम चीज जो हमने पहले करी थी, वी कैन डू इट ओवर हियर एज वेल. सो दैट्स हाउ दैट वर्क्स. आई कैन go on for any other text. Let's say I have this Nunito text and I can choose कि मुझे ये किस तरह का दिखाना है, right? Do I want it to be extra light? Do I want it to be extra bold? या फिर extra bold italic? So I can choose that over here. ठीक है? So let's just say I want to still go with Comica Alexis. So I'll just click on this right now. उसके नीचे I have this alignment. So if I'm writing a long paragraph, then I can choose for it to be aligned a certain way. So I can do that. I have the line spacing. तो बेसिकली अगर मैं बहुत सारा पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो लाइन के बीच में स्पेसिंग जो होगी, आई कैन ऑल्टर दैट विद द हेल्प ऑफ दिस. सो दैट इज वन थिंग दैट वी हैव. उसके बाद you go down, you can see the position, right? So you can also alter the position if you want to, like this. ठीक है? And again you can always reset it. Rotation you can do that. Scale is the same thing. Then we have this 3D text. If you want this text to be 3D, then you can choose it like this, and then you can alter how does this text really work. मतलब इस तरह से रहेगा, किस तरह से रहेगा, you can alter it right here like this, right? तो you can have the whole 3D axis in front of you, and ये काफी interesting बन सकता है इस तरह से, right? But if you don't know how this works, you can always uncheck this and you can go back to normal. Okay. ठीक है. So next what you will do is यहाँ पर जाकर के you will find the outline. So if you click on this, you will see कि हम यहाँ पर outline डाल सकते हैं. I'll click on, I will enable this, and then I can pick a color for this outline. Let's just go with black. So black color जो होता है hex color, that is just 000, and you can then implement this right here. Wait a minute. So now I have black text right here. उसके बाद I can choose the opacity of this outline. So I can always increase it, decrease it, however I want to. I can edit that right here. Then I have the blur, and then I have the width. So I will increase this width to, let's say, 10. If I do that, then you can properly see how this text is now a lot more visible to you. पहले सिर्फ white था तो वो अच्छे से it was not visible, but now that you have that black background, then it is a lot better, right? You can always mess around with this. You can increase it a lot more if you want to, but I like to keep it at about 8. 8 looks good to me. Then we can go around. We can also increase the blur. तो blur क्या होता है? Blur is just for this black outline that we have. We can increase it. So that is also definitely possible. ठीक है? So that's how that works. Let's look at the glow. तो if you want your text to glow, then you can enable this. Same चीजें होती हैं उसके अंदर भी. You can try it out yourself. Then you have drop shadow. So if you want to enable drop shadow, then you can do this. Let's just say opacity is going to be 90% and blur is going to be, let's say, 5, and distance is going to be, let's say, 10. So इससे क्या होता है? You can have like a drop shadow at the back of the text that you have. So that is also something that you can implement if you want to do that right here. ठीक है? So that's basically how that works. I hope you're able to understand. यहाँ पर you can choose other 2D and 3D styles. ठीक है? So whatever style you want to go ahead with, you can do that right here. So that is also possible. ठीक है? तो यहाँ पर हो गया हमारा text की वाली बातें. We also have footage that we can add on top of it. So if I go here, I can always search for websites like Pexels, pexels.com, or I can go to a website like Unsplash, and that way I can get access to all of the free available assets, that is video or
all the other things that are available, right? So I can just search here for any type of video and I can start using it. I can always go to Pexels and I can search for something like, walking, for example. Okay, walking. I can go into the videos tab और मैं इन videos को free में without giving any credit या ऐसी कोई चीज I can use it in my project. That is the magic of having a website like Pexels. So let's just say that I want to download this. So I have downloaded this with me now, and I can now put that on top of this thing that I have. So I will go with downloads. I will go to downloads and I will just import it right here. And then I can include this video over here on top of my video. Right? अगर आप एक college student हो, तो one thing that you will be using every single day is going to. Okay, so now I have this video with me. Same चीज कर सकता हूँ. I can use option plus square bracket to cut off any unwanted footage that I might have. Okay, उसके बाद what I need to do is I need to then look at इसको zoom in करना है कि नहीं करना है. So I can also always zoom this. I can use positioning. I can also rotate it if I want to. So all these things are available to me. Okay, so we have learned about this as well. Let's just quickly take a look at different transitions that we can implement. Okay, so transitions में क्या होता है? Basically you are transitioning from one footage to the next footage, and that is why you want the transition to be smooth. अभी क्या हो रहा है? अभी I'm playing this video. One thing that you will be using, and automatically एकदम से ये आ जाता है ये वाला footage. If you don't want that to happen, you can use a transition in between. तो वो कैसे करेंगे? Let's take a look at this. So let's just say I put a cut over here. I put a cut right here. And we click on detach audio. Okay? And then I will just click on this and I will bring this footage right here. And इसको मैं delete कर दूंगा. अब मेरे पास ये पूरी footage है. मैं बस बोल रहा हूँ तो मेरी सिर्फ audio है यहाँ पर. And I have this whole video available to me right here. Okay? Just give me a minute. Okay, so that's basically how that works. Now look, after this I can put a transition over here as well. तो मैं यहाँ पर जाऊँगा जो छोटा सा बटन था. I will click on this and I can now take a look at the camera transitions that I have. So I will quickly choose one transition and I will put it over here. ठीक है? So if I zoom in, यहाँ पे you can see what happens. I will be using every single day. So it just transitions, right? It shifts from it like this. तो पहले क्या होता, पहले बहुत ही roughly it was coming and going, but now it has like a proper motion with it, and that looks much better. So that's basically what you can implement right here. Okay, now you can also reduce the duration of this transition every single so that it will happen a lot faster, or you can also increase it if you want to. You can also change the location of this. You can take it here, you can take it there, but that's basically how this works. Okay, so that's a little bit about transitions. You can have various different transitions available to you. Let's just take a look at some of them. So you can have a transition like this, in which there is like a white, there is like a colored slideshow that comes over top of the footage, or you can have overlay transitions. So इस तरह से the footage can overlay on top of it. Then you have camera transition that I just showed you right now. तो यहाँ पे just transitions like this. Okay, तो यहाँ पे भी बहुत सारे formats होते हैं in which this actually happens. So you can take a look at this. ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं. You have various things right here. Transitions, ये भी एक तरह का transition होता है इस तरह का, So this is all what you get. You can go into movements and we can also go for slide. I'll show you what slide is and how it works in just a minute. We will just click on this and we will go for slide, and slide को मैं लेकर के इस asset के ऊपर डाल सकता हूँ इस तरह से. ठीक है, अब slide is also an effect that we have, and इसमें क्या होता है, I will just show it to you right now. So I will first of all reduce the duration of this. इसको बंद करते हैं and we will focus on this effect itself. तो वीडियो के अंदर ये फोटो स्लाइड इन होगी, राइट? सो आई वांट दैट टू हैपन.
that is the effect that I want to create. So वो करने के लिए क्या करूंगा मैं, I'll first of all reduce the size of this and I will put it somewhere here. And if I want it to come into the video frame, then this is how it will happen, right? It will not appear randomly. It will appear with this slide in animation. So this is one thing that we can do. We can also change the direction in which this is happening. We can do it up. So तो उसके बाद फिर नीचे से ऊपर आएगा, right? Going to be like this, and then you can do other things as well if that's what you want to do, right? You can do down, तो फिर ऊपर से नीचे आएगा. It's going to be your इस तरह से, right? So you can test it out. You can see what works best for you, and you can start using that. ठीक है? So that's one thing that we can do. और भी तरह की चीजें होती हैं, slide in, slide out, slide push, slide swap. But this is what you should keep in mind for this one part. I'll just quickly take your questions if you have any, right? Just to make sure that you understand and don't have any doubts along the way. Okay, so can we use pirated version of Premiere Pro? It's up to you, bro. I cannot tell that right now. Just had a call from an academy for my IITJ preparation course. Honestly, is it worth it? Video ratio for YouTube short 1080 into 1920. Okay, now let's just go and take a look at the doubts. Okay, I'll just quickly finish this off. Please select good editing software, Windows 7, free and without watermark, DaVinci Resolve. Speak in English, I don't know Hindi. Okay. I spoke in English for the most amount of time, I think. Okay, so I have been programming from a quite time now, but that is on and off. But now I have been finally practicing Java. Okay, that is not related to what we are talking right now. Do you know Tharun Speaks? You've talked about this. I have i3 processor with 8 GB RAM. Try to get at least i5 processor, and then it will be much better when you are editing videos. Okay, so that's basically how that works. I have Ryzen 5 HP gaming. That is great for you to start editing a video. Can you please edit a video for us? वही तो कर रहा था अभी पूरे time में. No one buys my gig. ठीक है, let's just also look at how do you get clients, right? So before you start pitching to clients, make sure that you understand that clients need to see your potential. And for them to see your potential, you need to start building projects. Okay. So make sure that you have a proper portfolio in which you've listed all of the projects that you have, and you can show them that, and that would be the best way for you to get opportunities. Okay. I'll just give you an example of a video editor that we recently hired. So he just emailed me saying that my content helped him, and because of that, he showed me his projects, and that's how he got started. Okay, so I'll just show you his portfolio, which looked really good to me. So I'll just go over here. Okay, just give me a minute. So I'm going to show you real projects and real emails that are shared, right? So this person just emailed me saying that, hey, really inspired by my content, and this is what he has done in the past couple of years. So he shared with me all of the video editing work that he has done, as you can see right here. And then he has sent me various different videos that he has edited. Okay, so that's basically what he did. Let's just look at each video and see what it is about, right? So this is a video that he sent me as his portfolio. तो ये वीडियो उसने एडिट करी थी. एडिट करने के बाद he put it up in his portfolio. Now he is showing that to me right here. So I can always run this right here. Right, so I can now view what video has he edited और उसको कैसे edit किया उसने. ठीक है, and this is the best thing that you can do. Don't just email people saying that, oh, I have experience or I can edit your video. Show them your work, and that is going to be really good. ठीक है, and that is the best way to get started. So this is one video that he edited himself, and then another video that he edited himself. This one right here. So that's basically how that works. That's pretty much it. Voiceover videos, you can also see how he is editing.
So you will see that he is sending me a lot of different videos that he has edited so that I can pick anyone whichever works for my needs, right? So let's say अगर मेरे को सिर्फ voice over video करने थे, so then I can see how did he edit these videos, and then I can get an experience of how good he is at editing videos. So make sure that you edit a variety of different videos and then show that to your clients and let them choose the type of video that they want to get edited. Okay, so that's what I would say. This is the best way to get work, or you can also go to Upwork. You can go to upwork.com. You can make your profile and you can start pitching clients. Okay, so when you go here, you can just search for, you can start applying for projects as well, right? So मैंने भी कई बार अपने projects यहाँ पे list करे हैं और बहुत सारे लोग apply करते हैं projects के लिए, right? So you can do that. You will find a lot of different video editors right here. If I search for video editing right now, video editing, I'll just search for that and you can see how much people are charging for every single video that they are editing. Okay, so a lot of potential is there, as you can see right here. But you need to have proper knowledge of how to edit great engaging videos for your clients. Okay, recently on my channel, all the videos that are being edited are done by a couple of editors that I have, and I got them because they are great at editing videos. They understand what the client wants and they can edit fast. They can edit the videos very quickly, and that is basically why I have them, why I have hired them basically. Okay, so that's how that works. That's how you get clients. Let me look at more doubts if there are any. Can be used by edited software Final Cut Pro and it is not free. Yes, it is. It has a 90-day trial that you can take, and then you have to pay for it obviously. The thing is that video editors earn a lot, and so it's not a problem for them to pay for these softwares. But of course, if you are starting from scratch, you might not have the budget, so you can go with DaVinci Resolve. Okay, always go with DaVinci Resolve if you want to start for free. Base variant of M1 Air is going to be great. Definitely is going to be great. FCP कहाँ से परचेज करना चाहिए, कितने रुपए का होगा? I got the Pro bundle from Apple for about 17,000 I think, and that's how I started my journey. ठीक है, और if you want to buy Final Cut Pro specifically तो वो करीबन 30,000 का पड़ता है, but you can get it and that is just like a one-time payment that you need to do. ठीक है, then you can start using it whatever purposes that you might have. I have i5 and 8 GB RAM. That is going to be enough for you to start. Upgrade कर सकते हो, but it is enough for you to get started. ठीक है, so that's what I would say. Trying to go through all of your doubts. Tell a good editing software in Windows 7. I've talked about this. Let me just get to the. Sir, I only have 4 gigs of RAM, but I don't plan on editing professionally, just for some YouTube videos. I only have i5 3rd gen. Should I add more RAM? You can do with this. मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब वीडियो एक्सपोर्ट करोगे ना तो वीडियो के एक्सपोर्ट होने में टाइम लगेगा. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट माय सिस्टम इज गोइंग टू डू इफ आई एडिट माय वीडियो. अभी तो टाइम नहीं है, बट बेसिकली मेरे सिस्टम में आई विल पुट द वीडियो ऑन एक्सपोर्टिंग एंड इट एक्सपोर्ट्स द वीडियो इन जस्ट 2 minutes. ठीक है, so in just in 2 minutes your video will be exported. That is because I have a great system. अब मुझे याद है when I was having a very slow system, उस पर जब मैं एक्सपोर्ट पर डाला तो वीडियो को आधा घंटा लगता था एक्सपोर्ट होने के लिए. आधे से 1 घंटा तो मिनिमम होता ही था. So it's just about that. Okay, it's not like एडिटिंग नहीं हो पाएगी, it's just that कि बहुत टाइम लगेगा एडिट होने में. 4 gigs तो कम से कम you should go with at least 8 GBs of RAM. Please also suggest laptop to buy in order to edit professionally. वही मैंने बताया अभी. Guys, what is the name of this software and is it free? Final Cut Pro, and it is not free, but you can get DaVinci Resolve and that is free. So I only have, okay, I'm in class 10. Can I start freelancing in video editing? I have done it a lot. If yes, only point is how to get a good portfolio, what to do to get started. Yes, you can get started at class 10th. Learn how to professionally properly edit your video. बहुत सारे YouTube पे free tutorial हैं that are available, or you can also get some courses and then you can start learning about how editing really works.
always remember, if you want to pitch a client, you must have proper portfolio to show, right? Videos that you've edited before. Agar if you don't have any projects before, then you can pick any, let's just say Elon Musk की कोई speech है, right? और Steve Jobs की कोई speech है, उसको पकड़ो, उसका audio use करो, and then you can use your own text, your own editing skills on top of that to edit a voiceover type video, and then that can become your own project. और बहुत सारे footage होते हैं that you can use to record and edit your own video, ठीक है? So that's what I would say. How to get customer if I know editing. ईमेल करो, अच्छे से ईमेल करना जानो, राइट? सो you can email all of the YouTube creators, because YouTubers को edit करने का time नहीं रहता है, but they have to do it unfortunately because अच्छे editor नहीं मिलते, right? Many times it happens, and so if you can reach out to them, then they can definitely give you work. Final Cut Pro purchase, how to add text line like Mr. Who's the boss. वही सेम चीज जो मैं दिखाया था, अभी मैं दिखाया था कैसे करना है वो. You just add a background, you just add a outline and a drop shadow, and then it will start looking like Mr. Who's the Boss videos. Tell us about freelancing, बताया अभी मैंने. भाई Final Cut Pro purchase 512 GB MacBook enough? Yes, it is going to be enough, but get an external SSD and then you can be much more free to edit whatever video you want to. ठीक है? FCP क्रैक यूज करके ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हैं क्या? ब्रो क्रैक मुझे पता नहीं कैसे होता है, राइट? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. फ्रीलांसिंग डेफिनेटली कर सकते हैं वंस यू गेट द वीडियो एडिटेड. ओके, सो कैन वी यूज Parrot's version of Premiere Pro? You can use it if you want to, but I don't recommend that. How do you use icons in your images? Are there? So what I can do is, I just go to flat icon, right? So I just go to flaticon.com. I go to this website. I'll share this with you right now. I will go to this website called as flaticon.com, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ for whatever icon that I need, and उसको सर्च करके I can download it and I can start using it with me. ठीक है? So that's basically how that works. All right. Thank you so much for joining me here. I have to end the session right now. I will get in touch with you for the next class. Okay. Hello. Thank you so much. You can use a chroma key to get rid of the green screen. Okay. Chalo. Bye bye.